केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान झारखंड की राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में स्थित है। ये भारत का प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। सीआईपी की स्थापना सन 1918 में की गई और आज वर्ष 2023 में हम इसका 106वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर संस्थान के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के सभी चिकित्सक और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जोहार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। वैश्विकीकरण एक ऐसा शब्द जिससे आज हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं और इसका असर लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आए दिन नए नए तकनीक, नए नए उपकरणों का आविष्कार किया जा रहा है, जिसका उपयोग हम दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठकर आराम से कर पा रहे हैं। बात यदि स्वास्थ्य की हो रही है तो मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते और आज भी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में, जहां पर इसका 106वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि वैश्विकीकरण के युग में मनोचिकित्सा की क्या स्थिति है। तो आइए देखते हैं संस्थान की भविष्य में क्या योजनाएं हैं और किस तरह से वैश्विकीकरण और मनोचिकित्सा एक दूसरे से संबंधित है। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, सह विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। This year is a very important year for all of us because we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75th year of our independence. At the same time, we are presiding over G20. So this is an honor for all of us. You all know that G20 consists of 19 countries plus European Union, so which covers almost 75% of the world population. And we are presiding over that. And every year one country is to preside. Last year it was Indonesia, this year ourselves. We started from 1st December 2022, which will end on 30th November 2023, which will be taken over by Brazil. So this is a unique opportunity for all of us to showcase what is available with us, what practices we follow, what belief we carry to the whole world. And particularly this is more important, as you all know that with the advent of globalization is a kind of two-edged sword. So obviously there are lots of goods associated with it. At the same time there are lots of bads also. So we have to focus on increasing the goods and decreasing the bads, which is bound to happen with globalization or happening. So particularly the focus should be on the marginalized sector, the underprivileged one, the deprived one. So with this globalization process, the gap has further widened. So we need to bridge that gap. So that's why we kept this year the theme that globalization and mental health marching towards G20 leadership year. So this was very thoughtfully kept. I am thankful to my faculty for choosing this theme, and I am also thankful to the speakers. As a tradition, what we do that we call upon who have joined 25 years back and 10 years back, these two batches. So I happen to be one of them who joined 25 years back this institute. So, and I am seeing quite a few people of my batch
Obviously, Dr. Sanjay Munda is there, who will also be speaking on the marginalized sector I was talking about. When Dr. Indrani is there, Anand is there, Manisha is there, and maybe few others are about to join. And similarly, from the 2013 batch, Dr. Nikhil Nair will be speaking on another marginalized community, which is LGBTQ. And then Malavika Parak, who is also from 2013 batch, MPhil Clinical Psychology. So she will be speaking on mother-baby kind of relationship and the issues related to it. So very thoughtfully chosen the topics, and I hope that this will be immensely helpful for all of us, and we will definitely come out with new insights so that in future we can dwell upon these areas. Now coming to CIP, you all know that it was established in the year 1918 by the Britishers in the name of European Mental Asylum. So in the year 20 it was changed to hospital. Then subsequently many changes in the name of Interprovincial Mental Hospital, Hospital for Mental Diseases, and finally in the year 1977 the current name of Central Institute of Psychiatry. So it has a very rich, glorious past, and in between there was some kind of a slum, and we are trying hard to revive that past glory. And we are hopeful that in future we will be able to do that. And many things are happening in the institute. So you might be knowing that the number of seats have been increased in all the courses we run because of implementation of the EWS quota. And we are about to start one new course of MSc in Psychiatric Nursing from next year. And so Ministry has given us permission, and Sir has also approved our request. Thank you, Sir, for readily agreeing to our proposal and approving it. And in future, we are thinking of also starting postdoc fellowship and then about DN courses. And we will be thinking of starting MPhil and PhD in Psychiatric Nursing as well as PhD in Psychiatric Social Work. इस स्थापना दिवस के मौके पर मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। Whether globalization has an impact on these communities and thereby whether it affects their mental health as well. So this is what I will try to throw some light into. So we know that we live in this world where there are few individuals and community who often feel less important, less privileged, and less respected than few others who are more having more status, more privilege, or having more opportunities in their society or community. And these are the individuals who are considered outside of the mainstream way of thinking and behaving. So in a way they are often relegated to the border of the society, and because of the inherent prejudices, stigma, discrimination they face, it is quite obvious to think that they must be having mental health issues. Since they are relegated to the border of any society, so it is expected that the mental health care that should be available to them must be limited, or if they are available,
whether they are in the range of affordability for them. So, and we live in the era of global transition and restructuring, and in this backdrop, how globalization with its inherent characteristics and dynamics present a sort of complex scenario where it affects the mental health of these communities. So, coming right away to how marginalization occurs and affects people, we know that marginalization occurs when people or individuals, they are systematically excluded from the meaningful participation in various areas like economic, social, political, cultural, and all other forms of human activities and actions. And they are denied valuable opportunity to fulfill themselves as human beings. So, marginalization is defined as some sort of overt tendencies of human societies where those individuals who are perceived as less important, less worthy, or having no useful functions, or who don't have any quality to give some sort of contribution, they are excluded, they are marginalized in that way. And we know that these are the people, they have relatively little control over their lives and also the resources that are available to them. And all of this make them really handicapped in delivering contribution to the society. About the nature of marginalization, there is no general law as such to understand or comprehend the nature of marginalization. So, the nature of marginalization mostly varies in different settings. For example, you take the example of marginalization of women in Iraq or say Iran is very much different from marginalization of women in India. So it all depends on the religious, ideological system, patriarchy, political economy of the country, and also the overall social system. These all have an impact on marginalization of a specific group or individuals. Another example could be the elderly. There are some societies who give respect to the elderly population. So you can assume that those societies which have some respect for their elderly people, there the marginalization of the elderly is expected to be lesser than those societies where say the respect is not that much, or where the traditional family system is not present. आज के इस वैश्वीकरण के दौर में स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह के विकास किए जा रहे हैं और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर, व्हाट आई फील, कोविड ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। बेसिक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यू सी व्हेन वी आर यंग, वी आर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दैट टाइम फील्ड आर मेनी फील्ड्स आर देयर, और वो फील्ड भरे होते थे। टुडे इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गए हैं, शहर में जगहों की बहुत कमी है, फिर भी वो सारे फील्ड खाली हैं। इफ यू सी इन द इवनिंग ऑल्सो, कोई बच्चा खेलने नहीं जा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम, बुक रीडिंग। बच्चों को बुक रीडिंग से इतना ज्यादा दूरी हो गई है, दे ऑल आर गोइंग फॉर द, you can say, WhatsApp University, Facebook University, or Google. इन चीजों को दूर करना इतना जरूरी हो गया फॉर द यूथ। द चैलेंज आई एम फेसिंग सर, बिकॉज आफ्टर 10 और 10 years, उन्हीं यूथ जो हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, उनको कल
अपना देश हमको उनके हाथ में देना है। दे विल बी डीसी एंड वीसी एंड डायरेक्टर ऑल। ना हम उन्हें प्रॉपरली तैयार कर पा रहे हैं, ना वो प्रॉपरली तैयार हो पा रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है इज सो इम्पोर्टेंट। और ये इतनी बड़ी चैलेंज आ रही है कि क्लासेस, बच्चों को लाइब्रेरी का क्लास कंपलसरी करने के बाद ही बच्चे किताब नहीं देख रहे हैं। और अगर बच्चों को सही हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पता नहीं होगा, अगर सही कल्चर नहीं पता होगा, तो आने वाले समय में हिस्ट्री के कारण हमारा ज्योग्राफी बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। व्हाट आई मीन टू से, तो उन चीजों को जो ठीक करने के जो चैलेंजेस हमारे पास हैं सर, उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सपोर्ट की भी हमें जरूरत है। और उस सपोर्ट के थ्रू हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपके भी एक आध दो क्लासेस इस तरह के सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, सो दैट थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेट को हम लोग ओपन कर पाए। बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉकेट हो गया है। स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाई आई शुड कम एंड अटेंड योर क्लास। क्या आप नया पढ़ा रहे जो गूगल में नहीं है? यूजीसी ने नॉर्म्स दिया था, उसमें सिंगल जेनरिक था। जस्ट आई एम डिस्कसिंग आवर प्रॉब्लम्स, अभी वो डबल जेनरिक हो गया। बहुत जगहों पे, एक दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को डबल जेनरिक की जरूरत पड़ रही है। अब जब बच्चों को डबल जेनरिक पढ़े, मैं बोला फिर से एग्जाम देकर कर लो। उनका कहना नहीं, एग्जाम नहीं देंगे, आप एवरेज दो। अब फिजिक्स के एवरेज पर, केमिस्ट्री में साइकोलॉजी के एवरेज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के एवरेज इंग्लिश में कैसे दिया जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और उसके लगातार सिस्टम है कि नहीं, आप एवरेज करो, एवरेज मार्किंग करो, और एवरेज मार्किंग दूसरे जेनरिक में दूसरे जेनरिक से कैसे किया जा सकता है समझ में नहीं आ रहा है। और एवरेज का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि बच्चों का मेंटालिटी, एग्जाम नहीं देंगे, ऑनलाइन दो, नहीं देंगे एवरेज। अब 30,000 बच्चों का एवरेज मार्किंग आप जब करना शुरू करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा और उनका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। बट दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। मैं उनका प्रॉब्लम नहीं बता, मैं उनके मेंटल स्टेटस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कोविड में उन्हें लगातार जो हम लोगों ने कंपोजिट मार्किंग करते चले गए, हम लोग 4-4 सेमेस्टर उनको जो 98% इंटरनल मार्किंग के वजह से 93%, 85%, 96%, 88% मार्क्स आता चला गया। अब वो चाहते हैं कि वही मार्क्स उनको मिलता चला जाए। और उसका फैक्ट है, और वो हमें सीआईपी से वहीं पे हेल्प चाहिए। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, मुझे कहाँ आपकी हेल्प चाहिए। इस मेंटल ब्लॉकेट को खोलना मेरी बहुत जरूरी हो गई है। एग्जाम नहीं देना है, आप एवरेज मार्किंग कर दीजिए। फॉर्म भर दे रहे हैं, आप एवरेज मार्किंग कर दीजिए। तो सर ये आपके पास भी चैलेंज है, हमारे पास भी चैलेंज है, और हम भी चाहेंगे कि मैं ज्वाइंटली, मैं इस मामले को बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ और इन चीजों को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि यूथ को मैं कैसे हैंडल कर पाऊँ। और अगर हम कुछ लोगों को भी हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग भी रास्ता पे आने लगते हैं, तो धीरे धीरे इट विल कंटिन्यू। लेकिन स्टूडेंट्स का जो रिजिडनेस हो गया, जो स्टिफनेस आ गया उनके ब्रेन में, वो स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। आप लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, छोटे इंस्टीट्यूट में, अब भाई IIM में सारे क्रीम आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 1,65,000 स्टूडेंट्स जो हैं सारे रूरल एरिया के, सारे गरीब बच्चे हैं, सारे गरीब बच्चे हैं। मैं सिर्फ 100 रुपये एग्जामिनेशन का फीस ले रहा हूँ, उसमें भी लोगों का ऑब्जेक्शन है। जो कॉपी जांचने से लेकर टेबुलेशन करने तक का, कॉपी बाहर भेज के इवेल्युएशन कराने तक का, उसमें भी दिक्कत है लोगों को। 12 रुपये फीस है हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की, 12 रुपीज। मेरे पास फंड कहाँ से आएगा सर? 12 रुपये हमारे यहाँ फीस है सर। यू विल सरप्राइज टू नो, गवर्नमेंट से सिर्फ सैलरी पेंशन मिलता है, बाकी हमें सारे चीज अपने इंटरनल सोर्स से करनी है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत वैश्वीकरण और मानसिक चिकित्सा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और ये बताया गया कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में वैश्वीकरण की एक अहम भूमिका है। और ये बताया गया कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में वैश्वीकरण की एक अहम भूमिका है। Now we discussed a lot about postpartum, that still has some place in the ICT, or in somewhere we are in the process of yes, there is a word or a diagnosis, but
this part, the during pregnancy mood changes, is usually easily sidelined. Oh, these are hormonal changes, she'll be fine. But sometimes it's not, and it needs more attention. Currently the incidence rate is 11%, and antenatal depression has shown to be correlated with developmental delay in children by the age of 18 months. Now when we talk about concerns during pregnancy, now the anxiety of birthing, how will labor feel like, how painful it's going to be, what would be the complications, the information about pain management, or what are the harmful effects of it. Probably in the urban setup, yes, people know, but in the rural setup, it's still a topic that is not discussed. Women are expected, oh, you have to be brave and go through normal delivery. And if it isn't a normal delivery, there's a lot of stigma associated with it. Oh, she was weaker, at our times we were stronger, and so on and so forth. So, prior generation of women stigmatizing the next generation of women during pregnancy, choices that they make, is all impacting the mental health concerns of women. And of course, the attitude and interaction of healthcare professionals. So I've heard numerous stories of women who tell that during labor, how did the nurse treat? Sometimes the nurses are rude, sometimes, especially in tertiary centers, there's a lot of burden. A lot of times during the labor, they have been abused in terms of slapped or verbally abused, that do it faster, you can do it, and so on and so forth. So these are very distressing experiences, and if we talk about it with people who have gone through this, it is concerning as a mental health professional especially. Now postpartum concerns. The first is no sleep. The mother is to cater to the baby. The lack of sleep in any case causes mood changes. And apart from that, the distress, the body is still recovering. The post-delivery recovery is in itself a huge task. The pain management and so on is difficult. Attention still needs to be paid to that. Family, a lot of times this is a common discussion between pregnant women that, when I was pregnant, the family was concerned, are you eating properly, are you not eating properly, so on and so forth. But after delivery, the focus shifts on the infant, and sometimes loneliness creeps in on the mother. She is just, oh, your baby needs to be fed, and then the rest of the family manages. While she is recovering, but then the loneliness may be a factor. Breastfeeding issues. In multiple, there have been thankfully some qualitative studies done on mothers and their experience throughout pregnancy and post that. And one of the very interesting incidents that they shared was that breastfeeding slowly became a very isolated, lonely activity because it's her and the baby. She's missing dinner times, she's missing family lunch times, and it's a lonely activity. Usually family members or others become very uncomfortable when a woman is breastfeeding. So, and of course the physiological aspects of distress during breastfeeding is again impacting the mental health. And changes in relationship with partner. This aspect is yet to still gain addressing from mental health professionals. A lot of times when we have couples walking in for couples therapy, they are new parents. Many a times they are new parents and they are just confused that how do we handle this situation, because they suddenly become mother, father, but the old husband-wife unit of that family just gets missing, and the support from the husband or the support from vice versa, them supporting each other again is a difficulty. Nobody is prepared, nobody talks about these. These are general family conversations which they need to be, and because of that, people are not prepared that this is also going to change. So the world changes, but one solid support that also goes through a lot of changes.